श्रीजगदम्बिकायै नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण तृतीयः स्कन्धः अथैकोनविंशः। माता का शशिकला को समझाना, शशिकला का अपने निश्चय पर दृढ़ रहना, सुदर्शन तथा अन्य राजाओं का स्वर्ग में आगमन, युधाजित द्वारा सुदर्शन को मार डालने की बात कहने पर केरल नरेश का उन्हें समझाना। व्यास उवाच भर्त्रा सावेता बालां पुत्रीं कृत्वांक संस्थिताम् उवाच वचनं सुलक्षणं समाश्वास्य शुचिस्मितां किं वृथा सुदति त्वं हि विप्रियं मम भाससे पिता ते दुःखमाप्नोति वाक्येनानेन सुब्रते सुदर्शनोति दुर्भाग्यो राज्यभ्रष्टो निराश्रयः बलकोशविहीनश्च परित्यक्तस्तु बान्धवैः मात्रा सह वनं प्राप्ता फलमूलासनाकृशः न ते योग्यो वरोऽयं वै वनवासी च दुर्भगः राजपुत्रा कृतप्रज्ञारूपवन्ता सुसम्मताः तवार्हा पुत्री सन्त्यन्ये राजचिह्नैरलङ्कृताः भ्रातास्य वर्तते कान्ता स्वराज्यं कोसलेषु वै करोति रूपसम्पन्ना सर्वलक्षणसंयुतः अन्यच्च कारणं शुभ्रो शृणुयच्च मया श्रुतं युधाजित् सततं तस्य वधकामोऽस्ति भूमिपः दौहित्रा स्थापितस्तेन राज्ये कृत्वातिसङ्गरं वीरसेनं नृपं हत्वा सम्मन्त्र्य सचिवैः सह भारद्वाजाश्रमं प्राप्तं हन्तुकामा सुदर्शनं मुनिना वारिता पश्चाज्जगाम निजमन्दिरं शशिकलोवाच मातर्ममेप्सिता कामं वनस्थोऽपि नृपात्मजा शर्याति वचनेनैव सुकन्या च पतिव्रता च वनं च यथा प्राप्य पतिशुश्रूषणे रता पतिशुश्रूषणं स्त्रीणां स्वर्गदं मोक्षदं तथा अकैतव कृतं नूनं सुखदं भवति स्त्रियाः भगवत्या समादिष्टं स्वप्ने वरमनुत्तमं तं मृतेऽहं कथं चान्यं संश्रयामि नृपात्मजं मच्चित्तभित्तौ लिखितो भगवत्या सुदर्शनः तं विहाय प्रियं कान्तं करिष्येऽहं न चापरम्। व्यास उवाच प्रत्यादिष्टाथ वैदर्भी तथा बहुनिदर्शनैः भर्तारं सर्वमाचष्ट पुत्रोक्तं वचनं भृशं विवाहस्य दिनादर्वागाप्तं श्रुतसमन्वितं द्विजं शशिकला तत्र प्रेषयामास सत्वरं यथा न वेदमेतातस्तथा गच्छ सुदर्शनं भारद्वाजाश्रमे ब्रूहि मद्वाक्यात्तरसा विभो पित्रा मे संभृता कामं मदर्थेन स्वयंवरः आगमिष्यन्ति राजानो बलयुक्ता ह्यनेकशः मया त्वं वै वृतश्चित्ते सर्वथा प्रीतिपूर्वकं भगवत्या समादिष्टा स्वप्ने मम सुरोपमा विषमद्मेहुता सेवा प्रपतामि प्रदीपिते वरये त्वद्विते नान्यं पितृभ्यां प्रेरितापि वा मनसा कर्मणा वाचा संवृतस्त्वं मया वरः भगवत्या प्रसादेन शर्मावाभ्यां भविष्यति आगन्तव्यं त्वयात्रैव दैवं कृत्वा परं बलं यदधेनं जगत्सर्वं वर्तते सचराचरं भगवत्या यदादिष्टं न तन्मिथ्या भविष्यति यद्वसे देवता सर्वा वर्तन्ते शङ्करादयः वक्तव्योऽसौ त्वया ब्रह्मण्येकान्ते वै नृपात्मजः यथा भवति मे कार्यं तत्कर्तव्यं त्वया नघ इत्युक्त्वा दक्षिणां दत्त्वा मुनिर्व्यापारितस्तया गत्वा सर्वं निवेद्यासो तत्र प्रत्यागतो द्विजः सुदर्शनस्तु तज्ज्ञात्वा निश्चयं गमने तदा चकार मुनिना तेन प्रेरिता परमादरात्। व्यास उवाच गमनायोद्यतं पुत्रं तमुवाच मनोरमा
वेपमानातिदुःखार्ता जातत्रासाश्रुलोचना कुत्र गच्छसि पुत्राद्य समाजे भूभृतां किल एकाकी कृतवैरश्च किं विचिन्त्य स्वयंवरे युधाजित् हन्तु कामस्त्वां समेष्यति महीपतिः न तेऽन्योऽस्ति सहायश्च तस्मान्मा बृजपुत्रक एकपुत्रातिदीनास्मि तवाधारा निराश्रया नार्हसि त्वं महाभाग निराशां कर्तुमद्य मां पिता मे निहतो येन सोऽपि तत्रागतो नृपः एकाकिनं गतं तत्र युधा जित्वां हनिष्यति। सुदर्शन उवाच भवितव्यं भवत्येव नात्र कार्या विचारणा आदेशाच्च जगन्मातुर्गच्छाम्यद्य स्वयंवरे मा शोकं कुरु कल्याणी क्षत्रियासि वरानने न बिभेमि प्रसादेन भगवत्या निरन्तरं। व्यास उवाच इत्युक्त्वा रथमारुह्य गन्तुकामं सुदर्शनं दृष्ट्वा मनोरमा पुत्रमासेर्भिश्चान्वमोदयत् अग्रतस्तेऽम्बिका पातु पार्वती पातु पृष्ठतः पार्वती पार्श्वयो पातु शिवा सर्वत्र साम्प्रतम् वाराही विषमे मार्गे दुर्गा दुर्गेषु कर्हिचित् कालिका कलहे घोरे पातु त्वां परमेश्वरी मण्डपे तत्र मातंगी तथा सौम्या स्वयंवरे भवानी भूपमध्ये तो पातु वां भवमोचिनी गिरिजा गिरिदुर्गेषु चामुण्डा चत्वरेषु च कामगा काननेष्वेवं रक्षतु त्वां सनातनी विवादे वैष्णवी शक्तिरवता त्वां रघुद्वः भैरवी चरणे सौम्य शत्रूणां वै समागमे सर्वदा सर्वदेशेषु पातु त्वां भुवनेश्वरी महामाया जगद्धात्रे सच्चिदानन्दरूपिणी। व्यास उवाच इत्युक्त्वा तं तदा माता वेपमाना भयाकुला उवाचाहं त्वया सार्धमागमिष्यामि सर्वथा निमिषार्धं विना त्वां वै नाहं स्थातुमिहोत्सहे सहैव नय मां वत्स यत्र ते गमने मतिः। इत्युक्त्वा निःसृता माता धात्रेयी संयुता तदा विप्रैर्दत्ताशिषा सर्वे निर्ययुर्हर्षसंयुताः वाराणस्यां तथा प्राप्तो रथेनैकेन राघवः ज्ञाता सुबाहुना तत्र पूजितश्चार्हणादिभिः निवेशार्थं गृहं दत्तमन्नपानादिकं तथा सेवकं समनुज्ञाप्य परिचर्यार्थमेव च मिलितास्त्वथ राजानो नानादेशाधिपा किल युधाजिदपि सम्प्राप्तो दौहित्रेण समन्वितः करुषाधिपतिश्चैव तथा मद्रेश्वरो नृपः सिन्धुराजस्तथा वीरो योद्धा माहिष्मतिपतिः पाञ्चाला पर्वतीयश्च कामरूपोऽतिवीर्यवान् कर्णाटश्चोलदेशीयो वैदर्भश्च महाबलः अक्षौहिणी त्रिषष्टिश्च मिलिता संख्यया तदा वेष्टिता नगरी सातो सैन्यैः सर्वत्र संस्थितैः एते चान्ये च बहवः स्वयंवरदिदृक्षया मिलितास्तत्र राजानो वरवारणसंयुता अन्योन्यं नृपपुत्रास्ता इत्युचुर्मिलितास्तदा सुदर्शनो नृपसुतो यागतोऽस्ति निराकुलः एकाकी रथमारुह्य मात्रा सह महामतिः विवाहार्थमिहायाता काकुत्स्था किन्नु साम्प्रतम् एतान् राजसुतांस्त्यक्त्वा ससैन्यान् सायुधानथ किमेनं राजपुत्री सा वरिष्यति महाभुजम्। युधाजिदथ राजेशस्तानुवाच महीपतेन् अहमेनं हनिष्यामि कन्यार्थे नात्र संशयः
केरलाधिपति प्राह तं तदा नीतिसत्तमः नात्र युद्धं प्रकर्तव्यं राजन्निच्छा स्वयंवरे बलेन हरणं नास्ते नात्र शुल्कस्वयंवरः कन्येच्छयात्र वरणं विवादा कीदृशस्त्विह अन्यायेन त्वया पूर्वमसौ राज्यात् प्रवासितः दौहित्रायार्पितं राज्यं बलवन् नृपसत्तमा काकुत्स्थोऽयं महाभागकोसलाधिपतेः सुतः कथमेनं राजपुत्रं हनिष्यसि निरागसं लप्स्यसे तत्फलं नूनमनयस्य नृपोत्तम शास्तास्ति कश्चित् आयुष्य मज्जगतोऽस्य जगत्पतिः धर्मो जयति नाधर्मः सत्यं जयति नानृतं मानयं कुरु राजेन्द्र त्यज पापमतिं किल दौहित्रस्तव सम्प्राप्ता सोऽपि रूपसमन्वितः राज्ययुक्तस्तथा श्रीमान् कथं तं न वरिष्यति अन्ये राजसुता कामं वर्तन्ते बलवत्तरा कन्या स्वयंवरे कन्या स्वीकरिष्यति साम्प्रतं वृते तथा विवादः का प्रवदन्तु महीभुजः परस्परं विरोधोऽत्र न कर्तव्यो विजानता। जय जय श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितां तृतीय स्कंधे राजसंवाद वर्णनं नामैकोनविंशोऽध्यायः। अथ विंशः राजाओं का सुदर्शन से स्वयंवर में आने का कारण पूछना और सुदर्शन का उन्हें स्वप्न में भगवती द्वारा दिया गया आदेश बताना। राजा सुबाहु का शशिकला को समझाना परंतु उसका अपने निश्चय पर दृढ़ रहना। व्यास उवाच इति वादिनि भूपाले केरलाधिपतौ तदा प्रत्युवाच महाभागा युधाजिदपि पार्थिवः नीतिरेषा महीपाल यद्ब्रवीति भवानिह समाजे पार्थिवानां वै सत्यवाग्विजितेन्द्रियः योग्येषु वर्तमानेषु कन्यारत्नं कुलोद्भवः अयोग्योर्हति भूपाल न्यायोऽयं तव रोचते भागं सिंहस्य गोमायुर्भोक्तुमर्हति वा कथम् तथा सुदर्शनोऽयं वै कन्यारत्नं किमर्हति वलं वेदो हि विप्राणां भूभुजां चापजं बलं किमन्यायं महाराज ब्रवीम्यमिहाधुना वलं शुल्कं यथा राज्ञां विवाहे परिकीर्तितं बलवानेव गृह्णातु नाबलस्तु कदाचन तस्मात् कन्यापणं कृत्वा नीतिरत्र विधीयताम् अन्यथा कलह कामं भविष्यति महीभुजाम्। एवं विवादे संवृत्ते राज्ञां तत्र परस्परम् आहूतस्तु सभा मध्ये सुबाहुर्नृपसत्तमः समाहूय नृपा सर्वे तमूचुस्तत्त्वदर्शिनः राजन्नीतिस्त्वया कार्या विवाहित्रसमाहिता किं ते चिकीर्षितं राजस्तद्वदस्व समाहितः पुत्र्या प्रदानं कस्मै ते रोचते नृपचेतसि सुबाहुर्वाच पुत्र्या मे मनसा कामं वृता किल सुदर्शनः मया निवारितात्यर्थं न सा प्रत्येति मे वचः किं करोमि सुताया मे न वशे वर्तते मनः सुदर्शनस्तथैकाकी सम्प्राप्तोऽस्ति निराकुलः। व्यास उवाच सम्पन्नभूभुजा सर्वे समाहूय सुदर्शनम् ऊचो समागतं शान्तमेकाकी नमतन्द्रिताः ऊचो समागतं शान्तम् एकाकी नमतन्द्रिताः राजपुत्र महाभाग केनाहूतोऽसि सुव्रत एकाकी यः समायातः समाजे भूभृतामिह न वै सैन्यं न सचिवा न केशो न बृहद्बलं किमर्थञ्च समायातस्तत्त्वं ब्रूहि महामते युद्धकामा नृपतयो वर्तन्ते समागमे कन्यार्थं सैन्यसम्पन्ना किं त्वं कर्तुमिहेक्षसि भ्राता ते सुबला शूरा
सम्प्राप्तोऽस्ति जिघृक्षया युधाजिच्च महाबाहो साहाय्यं कर्तुमागतः गच्छवातिष्ठ राजेन्द्र याथा तथ्यमुदाहृतं त्वयि सैन्यविहीने च यथेष्टं कुरु सुव्रत। सुदर्शन उवाच न बलं न सहायो मे न कोशो दुर्गसंश्रयः न मित्राणि न सौहार्दी न नृपा रक्षका मम अत्र स्वयंवरं श्रुत्वा द्रष्टुकाम इहागतः स्वप्ने देव्या प्रेरितोऽस्मि भगवत्या न संशयः नान्यच्चिकीर्षितं मेद्य मामाह जगदीश्वरी तया यद्विहितं तच्च भविताद्य न संशयः न शत्रुरस्ति संसारे कोऽप्यत्र जगतीश्वरः सर्वत्र पश्यतो मेद्य भवानीं जगदम्बिकाम्। यः करिष्यति शत्रुत्वं मया सह नृपात्मजा शास्ता तस्य महाविद्या नाहं जानामि शत्रुतां यद्भावि तद्वै भविता नान्यथा नृपसत्तमा का चिन्ता यत्र कर्तव्या दैवाधीनोऽस्मि सर्वदा देवभूतमनुष्येषु सर्वभूतेषु सर्वदा सर्वेषां तत्कृतासक्तिर्नान्यथा नृपसत्तमा सायं चिकीर्षिते भूपं तं करोति नृपाधिपा निर्धनं वा नरं कामं का चिन्ता वै तदा मम तामृते परमां शक्तिं ब्रह्म विष्णुहरादयः न शक्ता स्पन्दितुं देवा का चिन्ता मे तदा नृपा असक्तो वा सशक्तो वा यादृशस्तादृशस्त्वहं तदाज्ञया नृपाद्यैव सम्प्राप्तोऽस्मि स्वयंवरे सा यदीक्षति तत्कुर्यान्मम किं चिन्तनेन वै नात्र शंका प्रकर्तव्या सत्यमेतद्ब्रवीम्यहं जये पराजये लज्जा न मेत्राण्वपि पार्थिवा भगवत्यास्तु लज्जास्ति तदधीनोऽस्मि सर्वथा। व्यास उवाच इति तस्य तदा कर्ण्यवचनं राजसत्तमाः ऊचो परस्परं प्रेक्ष्य निश्चयज्ञा नराधिपा सत्यमुक्तं त्वया साधो न मिथ्या कर्हिचिद् भवेत् तथाप्युज्जयिनी नाथस्त्वां हन्तुं परिकाङ्क्षति त्वत्कृतेन दयादिष्टा त्वां ब्रवीमो महामते यदुक्तं तत्त्वया कार्यं विचार्य मनसा नघ। सुदर्शन उवाच सत्यमुक्तं भवद्भिश्च कृपावद्भिः सुहज्जनैः किं ब्रवीमि पुनर्वाक्यमुक्त्वा नृपतिसत्तमा न मृत्यु केनचिद्भाव्या कस्यचिद्वा कदाचन दैवाधीनमिदं सर्वं जगत्सावरजङ्गमं स्ववशोऽयं न जीवोऽस्ति स्वकर्म वशगा सदा तत्कर्म त्रिविधं प्रोक्तं विद्वद्भिस्तत्त्वदर्शिभिः संचितं वर्तमानं च प्रारब्धं च तृतीयकं कालकर्म स्वभावैश्च तथा सर्वमिदं जगत् न देवो मानुषं हन्तुं शक्ता कालागमं विना हतं निमित्तमात्रेण हन्ति काला सनातनः यथा पिता मे निहता सिंहेनामित्रकर्षणः तथा मातामहोऽप्येवं युद्धे युधा जिता हतः यत्नकोटिं प्रकुर्वाणो हन्यते दैवयो गतः जीवेत् वर्षसहस्राणि रक्षणेन विना नरः नाहं बिभेमि धर्मिष्ठा कदाचिच्च युधा जितः दैवमेव परं मत्वा सुस्थितोऽस्मि सदा नृपा स्मरणं सततं नित्यं भगवत्या करोम्यहं विश्वस्य जननी देवी कल्याणं सा करिष्यति पूर्वार्जितं हि भोक्तव्यं शुभं वाप्य शुभं तथा स्वकृतस्य च भोगेन कीदृक् शोको विजानतां स्वकर्मफलयोगेन प्राप्य दुःखमचेतनः निमित्तकारणे वैरं करोत्यल्पमतिः किल न तथाहं विजानामि वैरं शोकं भयं तथा निशङ्क मे सम्प्राप्ता समाजे भूभृतामिह एकाकी दृष्टुकामोऽहं स्वयंवरमनुत्तमं भविष्यति च यद्भाव्यं प्राप्तोऽस्मि चण्डिकाज्ञया भगवत्या प्रमाणं मे नान्यं जानामि संयतः तत्कृतं च सुखं दुःखं भविष्यति च नान्यथा युधाजित् सुखमाप्नोतु न मे वैरं नृपोत्तमा या करिष्यति मे वैरं स प्राप्स्यति फलं तथा
व्यास उवाच इत्युक्तास्ते तथा तेन सन्तुष्टा भूभुजा स्थिता सोऽपि स्वमाश्रमं प्राप्य सुस्थिता सम्बभूवः अपरेण्ये शुभे काले नृपा सम्मन्त्रिताः किल सुबाहुना नृपेणाथ रुचिरे वै सुमण्डपे दिव्यास्तरणयुक्तेषु मञ्चेषु रचितेषु च उपविष्टाश्च राजाना शुभालङ्करणैर्युताः दिव्यवेशधरा कामं विमाने स्वमरा इव दीप्यमाना स्थितास्तत्र स्वयंवरदिदृक्षया इति चिन्तापरा सर्वे कदा साप्यागमिष्यति भाग्यवन्तं नृपश्रेष्ठं श्रुतपुण्यं वरिष्यति यदा सुदर्शनं दैवासृजा सम्भूषयेदिह विवादो वै नृपाणां च भविता नात्र संशयः इत्येवं चिन्त्यमानास्ते भूपा मञ्चेषु संस्थिता वादित्रघोषासु महानुत्थितो नृपमण्डपे अथ काशीपति प्राह सुतां स्नातां सुलङ्कृतां मधुकमालाः संयुक्तां क्षौमवासु विभूषितां विवाहोपस्करैर्युक्तां दिव्यां सिन्धुसुतोपमां चिन्तापरां सुवसनां स्मितपूर्वमिदं वचः उत्तिष्ठ पुत्रि सुनसे करे धृत्वा शुभां सृजं ब्रजमण्डपमध्येद्य समाजं पश्य भूभुजां गुणवान् रूपसम्पन्ना कुलीनश्च नृपोत्तमः तव चित्ते वसिध्यस्तु तं वृणुस्व सुमध्यमे देशदेशाधिपा सर्वे मञ्चेषु रचितेषु च संविष्टा पश्य तन्वङ्गे वरयस्व यथा रुचि व्यास उवाच तं तथा भाषमाणं वै पितरं मितभाषिणी उवाच वचनं बाला ललितं धर्मसंयुतं शशिकलोवाच नाहं दृष्टिपते राज्ञां गमिष्यामि पिता किल कामुकानां नरेशानां गच्छन्त्यन्याश्च योषितः धर्मशास्त्रे श्रुतं तात मयेदं वचनं किल एक एव वरो नार्या निरीक्षा स्यान्न चापरः सती त्वं निर्गतं तस्या या प्रयाति बभूवनथ संकल्पयन्ति ते सर्वे दृष्ट्वा मे भविता त्विति स्वयंवरे सृजं धृत्वा यदा गच्छति मण्डपे सामान्या सा तदा जाता कुलटे वा परा वधू वारस्त्रे विपणे गत्वा यथा वीक्ष्य नरान् स्थितान् गुणागुणपरिज्ञानं करोति निजमानसे नैकभावा यथा वेश्या वृथा पश्यति कामुकं तथाहं मण्डपे गत्वा कुरवे वारस्त्रिया कृतं वृद्धैरेतैः कृतं धर्मं न करिष्यामि साम्प्रतं पत्नीव्रतं तथा कामं करिष्येऽहं धृतव्रता सामान्या प्रथमं गत्वा कृत्वा संकल्पितं बहु वृणोति चैकं तद्वै वृणोमि कथमद्य वै सुदर्शनो मया पूर्वं वृता सर्वात्मना पितः तमृतेनान्यथा कर्तुमिच्छामि नृपसत्तमा विवाहविधिना देहि कन्यादानं शुभे दिने सुदर्शनाय नृपते यदीक्षसि शुभं मम। जय जय श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायां तृतीयस्कन्धे स्वपितरं प्रति शशिकला वाक्यं नाम विंशः अथैकविंशः। राजा सुबाहु का राजाओं से अपनी कन्या की इच्छा बताना, युधाजित का क्रोधित होकर सुबाहु को फटकारना तथा अपने दौहित्र से शशिकला का विवाह करने को कहना, माता द्वारा शशिकला को पुनः समझाना किंतु शशिकला का अपने निश्चय पर दृढ़ रहना। व्यास उवाच सुबाहुरपि तच्छ्रुत्वा युक्तमुक्तं तया तदा चिन्ताविष्टो बभूवासो किं कर्तव्यमिता परं संगता पृथिवीपाला ससैन्या सपरिग्रहा उपविष्टाश्च मंचेषु योद्धुकामा महाबला यदि ब्रवीमि तान् सर्वान् सुतानायाति साम्प्रतं तथापि कोपसंयुक्ता हन्युर्मां दुष्टबुद्धया न मे सैन्यबलं तादृक् न दुर्गबलमद्भुतं येनाहं नृपतीन् सर्वान् प्रत्यादेष्टुमिहोत्सहे सुदर्शनस्तथैकाकी ह्यसहायो धनाशिशुः किं कर्तव्यं निमग्नोऽहं सर्वथा दुःखसागरे इति चिन्तापरो राजा जगाम नृपसन्निधौ
प्रणम्यतानुवाचाथ प्रश्रयावनतो नृपः किं कर्तव्यं नृपा कामं नैति मे मण्डपे सुता बहुशा प्रेर्यमाणापि सा मात्रापि मयापि च मोदना पतामि पादेषु राज्ञां दासोऽस्मि साम्प्रतं पूजादिकं गृहीत्वाद्य व्रजन्तो सदनानि वा ददामि बहुरत्नानि वस्त्राणि च गजानरथान् गृहीत्वाद्य कृपां कृत्वा व्रजन्तो भवनान्युता न वसे मे सुता बाला यदि म्रियेत खेदिता तदा मे स्यान्महद्दुःखं तेन चिन्ता तुरोऽस्म्यहं भवन्ता करुणावन्तो महाभाग्या महौजसा किमेतया दुहित्रा मे मन्दया दुर्विनीतया अनुग्राह्योऽस्मि वा कामं दासोऽहमिति सर्वथा सुता सुतेव मन्तव्या भवद्भिः सर्वथा मम। व्यास उवाच श्रुत्वा सुबाहुवचनं नोचु केचन भूमिपा युधाजित्क्रोधतां राक्षसस्तमुवाच रुषान्वितः राजन्मूर्खोऽसि किं ब्रूषे कृत्वा कार्यं सुनिन्दितं स्वयंवरा कथं मोहाद्रचिता संशये सति मिलिता भूभुजा सर्वे त्वया हूता स्वयंवरे कथमद्य नृपा गन्तुं योग्यास्ते स्वगृहान् प्रति अवमान्य नृपान् सर्वास्त्वं किं सुदर्शनाय वै दातुमिच्छसि पुत्रीं च किमनार्यमतः परं विचार्य पुरुषेणादौ कार्यं वै शुभमिच्छता आरब्धव्यं त्वया तत्रो कृतं राजन्न जानता एतान् विहाय नृपतीन् बलवाहनसंयुतान् वरं सुदर्शनं कर्तुं कथमिच्छसि साम्प्रतम् अहं त्वां हन्मि पापिष्ठं तथा पश्चात् सुदर्शनं दौहित्रायाद्यते कन्यां दास्यामीति विनिश्चयः मयि तिष्ठति कक्कोऽन्योऽस्ति यः कन्यां हर्तुमिच्छति सुदर्शनः कियानद्य निर्धनो निर्बला शिशुः भारद्वाजाश्रमे पूर्वं मुक्तो मुनिकृते मया नाद्याहं मोचयिष्यामि सर्वथा जीवितं शिशो तस्माद्विचार्य सम्यक् त्वं पुत्रा च भार्यया सह दौहित्राय प्रियां कन्यां देहि मे सुभ्रुवं किल सम्बन्धी भव दत्त्वा त्वं पुत्री मे तां मनोरमाम् उच्चाश्रया प्रकर्तव्यं सर्वदा शुभमिच्छता सुदर्शनाय दत्त्वा त्वं पुत्रीं प्राणप्रियां शुभाम् एकाकिनेऽप्यराज्याय किं सुखं प्राप्तुमिच्छसि कुलं वित्तं बलं रूपं राज्यं दुर्गं सुहृज्जनं दृष्ट्वा कन्या प्रदातव्या नान्यथा सुखमृक्षति परिचिन्तय धर्मं त्वं राज्यनीतिं च शाश्वतीं कुरु कार्यं यथा योग्यं मा कृथा मतिमन्यथा सुहृदसि ममात्यर्थं हितं ते प्रब्रवीम्यहं समानय सुतां राजन्मण्डपे तां सखीभृतां सुदर्शनमृते चेयं वरिष्यति यदाप्यसौ विग्रहो मे तदा न स्याद् विवाहोऽस्तु तवीप्सितः अन्ये नृपतया सर्वे कुलीना सबला समा विरोधा कीदृशस्त्वेनं वृणोद्यद्य नृपोत्तम अन्यथाहं हरिष्येद्य बलात् कन्यामिमां शुभां मा विरोधं सुदुसाध्यं गच्छ पार्थिव सत्तम। व्यास उवाच युधाजिता समादिष्टा सुबाहु शोकसंयुता निःश्वसन्भवनं गत्वा भार्यां प्रासुचाभृतः पुत्रीं ब्रूहि सुधर्मज्ञे कलहे समुपस्थिते किं कर्तव्यं मया शक्यं त्वद्वशोऽस्मि सुलोचने। व्यास उवाच सा श्रुत्वा पतिवाक्यं तु गत्वा प्राह सुतान्तिकं वत्से राजाति दुःखार्ता पिता तेऽद्यापि वर्तते त्वदर्थे विग्रहा कामं समुत्पन्नोऽद्य भूभृताम् अन्यं वरय शुश्रोणे सुदर्शनमृते नृपं यदि सुदर्शनं वत्से हठात् त्वं वै वरिष्यसि युधा जित्वां च मां चैव हनिष्यति बलान्वितः सुदर्शनं च राजासौ बलमत्ता प्रतापवान् द्वितीयस्ते पति पश्चात् भविता कलहे सति तस्मात् सुदर्शनं त्यक्त्वा वरौयान्यं नृपोत्तमम्।
सुखमिच्छसि चेन्मह्यं तुभ्यं वा मृगलोचने इति मात्रा बोधितां तां पश्चाद्राजाप्यबोधयत्। उभयोर्वचनं श्रुत्वा निर्भयो वाच कन्यका। कन्योवाच सत्यमुक्तं नृपश्रेष्ठ जानासि च वृतं मम। नान्यं वृणोमि भूपाल सुदर्शनं ऋते क्वचित्। विवेशि यदि राजेन्द्र नृपेभ्यः किल कातरः। सुदर्शनाय दत्त्वा मां विसर्जय पुरात् बहिः। समां रथे समारोप्य निर्गमिष्यति ते पुरात्। भवितव्यं तु पश्चाद्वै भविष्यति न चान्यथा। नात्र चिन्ता त्वया कार्या भवितव्ये नृपोत्तम। यद्भावि तद्भवत्येव सर्वथात्र न संशयः। राजोवाच न पुत्रिसाहसं कार्यं मतिमद्भिः कदाचन। बहुभिर्न विरोधव्यमिति वेदविदो विदुः। विसृक्ष्यामि कथं कन्यां दत्त्वा राजसुताय च। राजानो वैरसंयुक्ता किन्नु कुर्युरसाम्प्रतं। यदि ते रोचते वत्से पणं विदधाम्यहं। जनकेन यथा पूर्वं कृता सीता स्वयंवरे। सैवं धनुर्यथा तेन धृतं कृत्वा पणं तथा। तथाहमपि तन्वङ्गीकरोम्यद्य दुरासदं। विवादो येन राज्ञां वै कृते सत्रिसमं व्रजेत्। पालयिष्यति या कामं स ते भर्ता भविष्यति। सुदर्शनस्तथान्यो वा या कश्चित् बलवत्तरः। पालयित्वा पणं त्वां वै वरयिष्यति सर्वथा। एवं कृते नृपाणां तु विवादः शमितो भवेत्। सुखेनाहं विवाहं ते करिष्यामि ततः परं। कन्योवाच सन्देहेनैव मज्जामि मूर्खकृत्यमिदं यतः। मया सुदर्शना पूर्वं धृतश्चेतसि नान्यथा। कारणं पुण्यपापानां मन एव महीपते। मनसा विधृतं त्यक्त्वा कथमन्यं वृणे पितः। कृते पणे महाराज सर्वेषां वसगाह्यहम्। एका पालयिता द्वौ वा बहवो वा भवन्ति चेत्। किं कर्तव्यं तदा तात विवादे समुपस्थिते। संशयाधिष्ठिते कार्ये मतिं नाहं करोम्यतः। मा चिन्तां कुरु राजेन्द्र देहि सुदर्शनाय मां। विवाहं विधिना कृत्वा संविधास्यति चण्डिका। यन्नाम कीर्तनादेव दुःखौघो विलयं व्रजेत्। तां श्रुत्वा परमां शक्तिं कुरु कार्यमतन्द्रितः। गत्वा वद नृपेभ्यस्त्वं कृताञ्जलिपुटोऽद्य वै। आगन्तव्यञ्च स्वः सर्वैरिह भूपैः स्वयंवरे। इत्युक्त्वा तं विसृज्यासो सर्वं नृपतिमण्डलं। विवाहं कुरु रात्रौ मे वेदोक्ता विधिना नृप। पारिबर्हं यथा योग्यं दत्त्वा तस्मै विसर्जय। गमिष्यति गृहीत्वा मां ध्रुवसन्धिसुता किल। कदाचित्ते नृपा क्रुद्धा सङ्ग्रामं कर्तुमुद्यता। भविष्यन्ति तदा देवी साहाय्यं न करिष्यति। सोऽपि राजसुतस्तैस्तु सङ्ग्रामं संविधास्यति। दैवान् हृदे मृते तस्मिन् मरिष्याम्यहमप्युत। स्वस्ति तेस्तु गृहे तिष्ठ दत्त्वा मां सह सैन्यकः। एकैवाहं गमिष्यामि तेन सार्धं रिरंसया। व्यास उवाच इति तस्या वचा श्रुत्वा राजासौ कृतनिश्चयः। मतिं चक्रे तथा कर्तुं विश्वासं प्रतिपद्य च। जय जय श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितां तृतीयस्कन्धे कन्याया स्वपितरं प्रति सुदर्शनेन सह विवाहार्थकथनं नामैकविंशः। श्री जगदम्बिकायै नमः। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान का भी स्पर्श करें। जय श्री कृष्ण।